Hello guys, this is Sukada put at this side from the EduCARE. Welcome back to our channel for daily current affair videos. आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 21st and 22nd October 2022. Before starting with the current affairs for the day, don't forget to follow our Instagram channel BEducare Official and also join our Telegram group where the link is available in the description box below for daily video links and the quiz. Cervical cancer vaccine to be launched in India in the year 2023. Serum Institute of India ने defer किया है HPV vaccine production by 2 years because of the focus on the COVID-19. As per Adar Punawala, Serum Institute of India start करने वाला है supply करने के लिए small quantities of the dose to the government of India in the early 2023. उन्होंने आगे ऐड किया है that the exports will have to wait up till the year 24 as the company has to build a scale of manufacturing to over doses of 150 million. Serum Institute of India दुनिया का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है जिसने प्रोडक्शन को काफी ज्यादा रश किया है कोविड वैक्सीन के लिए एंड उसकी फैसिलिटी जो है इंडिया में लोकेटेड है. Prime Minister Narendra Modi to launch Rosegar Mela Mega Recruitment. ये रिक्रूटमेंट ड्राइव होने वाला है 10 लाख लोगों के लिए ऑन 22 अक्टूबर 2022. ड्राइव लॉन्च करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यूरिंग द सेरेमनी. अपॉइंटमेंट लेटर्स हैंडओवर किए जाएंगे टू ओवर 75 lakh न्यूली इंडक्टेड अपॉइंटीज इन द फर्स्ट ट्रेंच. This will be a signified step towards fulfilling the continuous commitment of the Prime Minister to provide the job opportunities. New recruits select करे गए हैं across the countries जो join करने वाले हैं 38 अलग-अलग ministries को and the department of the central government. पंजाब ने डिसाइड किया है to restore the old pension scheme for its employees. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया है कि वो अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने वाली है एम्प्लॉइज के लिए. एज पर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ये डिसीजन लाखों एम्प्लॉइज को बेनिफिट करने वाला है जिनको ऑप्शन दिया जाएगा कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम ज्वाइन करना है कि नहीं. रिस्टोरेशन जो होगा ओल्ड पेंशन स्कीम का वो डिसकंटिन्यू किया गया था 2004 में, जो एक मेजर डिमांड्स थी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को कि उसको रिस्टोर किया जाए. ये एक लेटेस्ट डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एंड हैज बीन टेकन एज अ दिवाली गिफ्ट टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. इंडियन आर्मी को कॉप्टर्स मिलने वाले हैं टू बूस्ट द सर्विलेंस अलोंग द चाइना बॉर्डर. Indian Army has begun the process of procuring 80 mini remotely piloted aircraft systems and 1,000 surveillance copters to bolster its overall surveillance apparatus along the line of the actual control, that is LAC, with the China. The mini reportedly piloted aircraft is an ideal multi-sensor system to carry out day and night surveillance and the target direction in the high altitude regions. इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है नेक्स्ट जनरेशन अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल. दिस वाज टेस्ट फायर्ड ऑन 21 अक्टूबर 2022. मिसाइल टेस्ट फायर किया गया था फ्रॉम अ मोबाइल लॉन्चर फ्रॉम द एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ उड़ीसा. इसका स्ट्राइक रेंज ऑफ सॉलिड फ्यूल्ड सैनिटाइज्ड मिसाइल इज विद बिटवीन 1000 to 2000 किलोमीटर एंड इसने पास किया है ऑल मिशन पैरामीटर्स ड्यूरिंग द टेस्ट. इसरो प्लान करने वाला है टू लॉन्च द चंद्रयान 3 बाय जून 2023. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च चंद्रयान 3 थर्ड मिशन टू द मून इन द जून 2023. ISRO chairman S. Somnath interacted with the media at an event in Delhi and said that Chandrayaan 3 is now ready. यूके प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने रिजाइन कर दिया है एंड बन गई है शॉर्टेस्ट रूलिंग पीएम. She could not fulfill the promises she made while running for the conservative leader, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों ने
उनके ऊपर फेथ खो दिया, ना केवल लोगों ने बल्कि उनकी पार्टी ने भी उनके ऊपर फेथ खो दिया था. Prior to this, Conservative Party officials also assembled to the Downing Street while growing a number of trust lawmakers asked her to quit. Coming to the daily current affair quiz, the first question for the day is, 5th Khelo India Youth Games 2022 will be held in which state? The next question is, as per Global Multidimensional Poverty Index, the largest number of poor people in the world in the year 2020 lived in which country? The next question for the day is, coming to the answers asked in the previous video, who has been elected as the president and the co-president of the International Solar Alliance? The correct answer is India and France. Next question was, who has been elected as the Prime Minister of Sweden? The correct answer is Ulf Kristersson. The next question is, which of the following two countries have emerged as the final bidders to host the 2027 edition of the AFC Asian Cup? The correct answer is India and Saudi Arabia. The next question was, who has won India's first Greco-Roman medal in under-23 wrestling world championship? The correct answer is Sajan Bhanwala. Shout out to Neha Manoj, Tanvi Nayak, and Computer Man for giving the correct answers in the previous video. That's it, guys. Like this video and share this video as much as possible, and subscribe to our channel for daily current affair videos. For classroom, live class, recorded lecture, books, ebooks facilities, you can contact on the number which you can see on your screens. For more information and for more such MCQs, download the app from the link which is given in the description box below.